Hi everyone, welcome to lecture 42 of math series. So start करते हैं slide 1 से जिसमें we have all the 4 questions, so you can have a look and attempt them. And then we'll start with GS 1 question, which is on surrogacy. So the question is, discuss the issues relating to surrogacy that have been arising in India. To what extent does the Surrogacy Regulation Bill 2016 addresses these issues? So we'll start with the definition of surrogacy according to the bill. So it actually defines surrogacy as a practice where a woman gives birth to a child for an eligible couple, ठीक है, जिनको हम commissioning parents कहते हैं, and agrees to hand over the child after giving birth to the child to the commissioning parents, right? So however, surrogacy in India in the past decades have flourished. It has proliferated and is creating a wide range of issues. So what are these issues? First is the proliferation of commercial surrogacy. इतनी ज़्यादा ये surrogacy rackets have come up कि foreign couples they routinely come to India for availing the surrogacy services. So जैसे आपने surrogacy racket has been unearthed in various parts of the country, including cities like Hyderabad. ठीक है, so time and again has led to the exploitation ऑफ वुमेन. ठीक है, सो ये काफ़ी ज़्यादा सामने आता है कि इन सरोगेसी रैकेट्स में वुमेन की काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है, क्योंकि जो वुमेन होती है मोस्टली वो रूरल एरियाज, ट्राइबल एरिया से होती है, इलिटरेट होती हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं होती, मोस्टली नेपालीज वुमेन है ना, नॉर्थ ईस्टर्न वुमेन, दे हैव बीन एक्सप्लॉयटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. Okay, then complex issues related to parental claims, ठीक है, inheritance, ethics, etc. As old childless couples, single parents, homosexual couples and live-in partners also opt for surrogacy. So this needs to be regulated कि कौन से लोगों को surrogacy की services avail करनी चाहिए. Next, issue of the right of child also arises if parents who are seeking surrogate child abandon that child due to innumerable reasons कि उनको child healthy नहीं लगा, उसको कोई disease है, वो disabled है, disfigured है, या अगर twins पैदा हुए थे और जो commissioning parents है they only wanted one child, and then concerns which are related to the income generation by the surrogacy market, because it was abhi tak not regulated. So what are the provisions of the bill? Firstly है हमारे पास bill bans commercial surrogacy altogether and allowing only altruistic surrogacy. Altruistic surrogacy है कि एक ऐसा arrangement जिसमें कि monetary reward only involves medical expenses and insurance coverage for the surrogate mother. अगर जो woman है वो reproductive labor carry out कर रही है तो उसको उसके लिए कोई भी monetary compensation नहीं दी जाएगी, सिर्फ उसके medical expenses और insurance would be taken care of, which according to the bill will help in preventing the exploitation of women, जो कि बहुत ही rampant है. एंड उसके बाद एक और प्रोविज़न है कि जो सरोगेट मदर है जो वो है should be a close relative of the intending couple. Also, by allowing only one surrogacy to a woman in lifetime, better health is ensured of the surrogate mother and the child born. ठीक है, नेक्स्ट प्रोविज़न है permitting surrogacy to only Indian couples, foreign couples के नहीं, who cannot have children by natural methods या फिर technologies which are available for the same. That is they एक पार्टनर उनमें से दोनों में से कपल में से ज़रूर इनफर्टाइल होना चाहिए और 5 सालों से they should be married at least. Child born through this method will have the rights of the biological child. Next, OCIs, NRIs, foreigners, unmarried couples, single parents में क्या आता है, divorces, widowers, live-in partners, they are banned from availing it. It will help in preventing any unwanted situation for the child in future, right? Ensuring the rights of the unborn child. Then central and state surrogacy boards for regulating the surrogacy market, they have been set up. And then punishment for not less than 10 years along with the fine up to 10 lakhs will undermine the underground proliferation of surrogate industries. ठीक है, ये सब कुछ इसके provisions हैं. अब क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है बिल का? अब वो ये कह रहे हैं कि रेगुलेट करना चाहिए था रादर देन बैनिंग कमर्शियल सरोगेसी.
ठीक है, उसको रेगुलेट करना चाहिए था। दूसरी बात, अगर हम ऑल्टरिस्टिक की बात करें तो एक तरह से हम ये कह रहे हैं ऑल्टरिस्टिक की जगह वी शुड हैव कॉम्पनसेटेड सरोगेसी। ठीक है, कॉम्पनसेटेड सरोगेसी क्या है कि अगर एक वुमेन इज़ कैरिंग आउट रिप्रोडक्टिव लेबर तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे, हेल्थ इफ़ेक्ट्स, ठीक है, उसकी जो सरोगेट मदर है उसकी फैमिली पे इफ़ेक्ट्स है ना, और जो उसका टाइम होगा, ये सब चीज़ें के मद्देनज़र रखते हुए इट शुड बी कॉम्पनसेटेड सरोगेसी एंड नॉट ऑल्टरिस्टिक सरोगेसी, राइट। तो एक तरह से कॉम्पनसेटेड सरोगेसी होनी चाहिए। देन एक उसके बाद है कि जो बिल है डज नॉट डिफाइन द टर्म क्लोज रिलेटिव। ठीक है, एक तो डेफिनेशन नहीं है, और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में ना इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा टैबू है, तो लोग बताना नहीं चाहते अपने फैमिली मेम्बर्स को कि वो इनफर्टाइल है, तो उस केस में इट विल बी अ बिग थिंग फॉर द फैमिली, है ना, जो कपल है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो सकता है। और दूसरी बात है, अगर क्लोज रिलेटिव होगा तो जो कमिश्निंग पेरेंट्स हैं और जो क्लोज रिलेटिव है उसके लिए एक तरह से इमोशनली टर्बुलेंस कॉज करेगा, क्योंकि वो बच्चा हमेशा ही उसकी नज़रों के सामने रहेगा, तो इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए क्लोज रिलेटिव वाला भी थोड़ा क्रिटिसिज्म या कंसर्न आप दिखा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने कमर्शियल सरोगेसी बंद कर दी, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ अंडरग्राउंड सरोगेसी एंड दस इट में इनकरेज करप्ट एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो प्रोलिफरेशन और ज़्यादा होगी या एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा होगी वुमेन की। देन इट में एक्चुअली फोर्स पुअर वुमेन टुवर्ड्स प्रोस्टिट्यूशन एज एन ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड, जिनका बेसिकली सरोगेसी पर डिपेंडेंट था। नेक्स्ट, और हमारी इंडियन सोसाइटी इज़ वेरी मच पेट्रियार्कल, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वुमेन है, जो क्लोज रिलेटिव है, दैट माइट बी फोर्स्ड टू बिकम सरोगेट मदर, तो उस पर उसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। देन उसके बाद राइट्स ऑफ LGBT, सिंगल पेरेंट्स, फॉरेन कपल्स, है ना, उनके बारे में कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। सो उसके बाद और आप कंसर्न्स बता सकते हो कि 5 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, 1 साल कर देना चाहिए कि अगर आप इनफर्टाइल जैसे 5 साल की बजाय 1 साल तक देखें, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप उस जो कपल है उसका डिस्ट्रेस ही बढ़ा रहे हैं 5 साल करके, ठीक है। सो दीज आर ऑल द कंसर्न्स एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न इज नो रेगुलेशन ऑफ IVF क्लिनिक्स, ठीक है, जो IVF क्लिनिक्स हैं उनकी रेगुलेशन की बात नहीं हो, क्योंकि जो बिल है वो जेस्टेशनल सरोगेसी को प्रमोट करता है एंड फॉर जेस्टेशनल सरोगेसी IVF क्लिनिक्स आर इम्पॉर्टेंट, उसकी कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। सो ये तो हो गए कंसर्न। सो वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो कि इसकी इफेक्टिवनेस प्रोपोज्ड बिल विल लाई इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद वे फॉरवर्ड में ना आप 3-4 पॉइंट्स और बता सकते हैं, जैसे कि एक तो हम ये कह सकते हैं कि इट शुड बी अलाउड फॉर सिंगल, है ना, लिव इन कपल्स, फॉरेन कपल्स, है ना, और इन सब के लिए भी अलाउड होना चाहिए। LGBTQ कम्युनिटी के लिए भी अलाउ कर देनी चाहिए सरोगेसी, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद यू कैन ऑल्सो सजेस्ट इन वे फॉरवर्ड के ब्रेस्ट मिल्क बैंक की बात करें फॉर द सरोगेट चाइल्ड, ठीक है, उनको सेटअप करना चाहिए, और ट्राई पार्टाइट अग्रीमेंट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेपरेट अग्रीमेंट्स, देयर शुड बी वन अग्रीमेंट ओनली, है ना। एंड देन लास्टली यू कैन से दैट देयर शुड बी कॉम्पनसेटेड सरोगेसी इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिस्टिक, ठीक है। देन रेगुलेशन ऑफ IVF क्लिनिक्स शुड बी देयर, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। ये सब चीज़ें आप वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हैं, फर्दर कंक्लूडिंग द GS1 आंसर। नेक्स्ट इज GS2. So this question is parliamentary committees perform an important function of maintaining continuous accountability of the executive. Explain. What are the factors that limit the functioning of these committees, right? So parliamentary appoints certain committees to exercise control on the activities of the executive as part of its functions. So there are two kinds of committees. एक कौन सी है हमारे पास, standing, और दूसरी होती है ad hoc. Ad hoc committees are usually appointed for a specific purpose and they can be either select or joint. जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके एग्जाम्पल्स हमें पता ही है, पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेट, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एट्सेट्रा, ठीक है, दे आर मोर permanent in nature. In order to improve parliamentary oversight of the executive, a second type of standing committees known as departmentally related standing committees were created in 1993. So they maintain continuous accountability, क्योंकि एक तरह से जो भी issues हैं चल रहे हैं, they provide an in-depth study of the issues under
consideration in parliament, which MPs may not do due to insufficient time at their disposal during sessions. ठीक है, so ये detailed scrutiny carry out करती हैं for the demand, let's say example है for the demand of the grants. तो जो भी चीज़ें हैं उसकी in depth study they will carry out. Next, they do unbiased scrutiny as it is devoid of any party bias, which is major hindrance in the working of the parliament. ठीक है, so they are beyond anti-defection या committees पे anti-defection doesn't apply. ठीक है, so they do not have to toe the party line. So that is also a very important issue. And then the parliament passes budget once. It is these committees which facilitate control regarding economy and the efficiency in public expenditure during the year. Like you can give an example of PAC. ठीक है, so they maintain continuous accountability, but then they obviously reduce the burden of the parliament, है ना, but there are certain limitations. ठीक है, they do not consider matters of day-to-day administration. Next, they have sometimes committees के sometimes ना overlapping functions होते हैं. ठीक है, same function are performed by two different committees. Next is that their recommendations are advisory in nature and they are not binding on the parliament. Then their investigation or scrutiny most of the times is post-mortem, or they unearth the irregularities years after they have occurred. ठीक है, नेक्स्ट, सो दीज आर द इश्यूज. ठीक है, और आप कह सकते हो दैट देयर फंक्शनिंग इज नॉन ट्रांसपेरेंट. ठीक है, एंड यू कैन से दैट ऑल दीज थिंग्स कैन बी सेड अबाउट देयर लिमिटेशंस. बट डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस द पार्लियामेंट्री कमिटीज डू प्रोवाइड एन ऑनगोइंग डिसिप्लिनरी ओवरसाइट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, सो दैट इज वाई दे आर वेरी important. Next is GS3. While India's defense budget is now the fourth largest कैसे है? After USA, we have China and then we have UK. So India का जो defense budget है that is fourth largest in the world. It is still not providing commensurate results in terms of outcome. Analyze. Discuss the reforms that must be taken in the defense sector for better utilization of funds. So it is based on an article that appeared in Livement somewhere in February. So budget 2017-18 has increased the defense allocation significantly, making it fourth largest in the world. But we say that commensurate to allocation there has been marginal improvement in condition of the armed forces. So experts have called it overmanned. ये कहा जाता है कि पर्सोनल बहुत ज़्यादा है, poorly equipped, dissatisfied, early 20th century force with constraints that impede significant capacity creation and inventory modernization. Army especially has been under regular attacks from terrorists and infiltrators. Thus, we are not able to generate sufficient bang with the buck owing to the following factors. So, despite having so much allocation of fourth largest in the world, why are we not able to generate sufficient bang? Personal cost. आर्मी में पर्सोनल कॉस्ट इंक्लूडिंग पेंशन 72% ऑफ द बजट तो पर्सोनल कॉस्ट ही ले जाते हैं. ठीक है, एयरफोर्स और नेवी में ये थोड़ा कम है बट कंसिडरेबल है, 34% एंड 28% रिस्पेक्टिवली. देन जो एलोकेशन है वो डिक्लाइन कर रही है. ठीक है, जो बजट एलोकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन है वो डिक्लाइन कर रही है नेवी और आर्मी में. ठीक है, दो इट इज़ इंक्रीजिंग फॉर द एयरफोर्स क्योंकि एयरफोर्स ने रफाल डील, चिनूक एंड ऑल दैट, सो इट इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू रीसेंट इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट्स. नेक्स्ट, अंडर यूटिलाइजेशन. एक तो है कि फॉल कर रही है एलोकेशन और दूसरी बात है कि अंडर यूटिलाइजेशन है कि जो भी एक्विजिशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड्स दिए जाते हैं, अमाउंट दिया जाता है, दैट इज़ ऑफन अंडर यूटिलाइज्ड एंड लैप्सेस. लैक ऑफ इंडिजिनाइजेशन. इससे क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट है एंड मेंटेनेंस है विच वुड हैव बीन लेस अदरवाइज इज मोर बिकॉज वी डू नॉट हैव इंडिजिनाइजेशन. देन डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मिसमैच है कि जो फोर्सेस की डिमांड्स हैं और जो उनको मिलता है or what is procured, there's a big mismatch from that. And then we have transparency, lack, slow pace are also some of the issues which are plaguing the procurement process. So however, these facts are not lost on government, which has decided to take some key reforms. So what are these? Defense procurement organization to integrate and streamline long and arduous process of defense acquisitions. Then to shorten the procurement cycle, financial powers of the defense minister and secretary, they have been increased so that only procurements above 3,000 crores need now cabinet approval.
Next, a role on defense budget to have enough capital expenditure available for modernization as against the present practice of surrendering unspent capital budget at the end of each financial year. तो उससे underutilization वाला issue would be taken care of. Then downsizing or rationalization of manpower in organization, which can lead to significant savings. It has been done in China. Then defense procurement policy of 2016 to leverage indigenous manpower and engineering capability. Then performance audit of role of non-combat organizations under defense ministry. Unka performance audit should be carried out. They include those dealing with defense estate, accounts, Director General of Quality Assurance, Ordnance Factory Board, DRDO, NCC, etc. So it should be taken care of. Army has set Army Design Unit as a single point contact between Army and industry regarding design specifications. It would act as an in-house design unit which is better placed in gauging the correct requirements of the Army. So एक Army Design Unit is one single point contact. ठीक है? So these are the features. These are the reforms which have been carried out. So what is the way forward? Way forward में जैसे Chinese example है that they have reduced its force by 2 million in the last 2 decades and invested the saved amount on modernization to emerge as a leaner and better equipped force. India also has a large amount of equipment which is obsolete, but it can be used for other countries and that can actually generate some money. Okay? Then India can also provide necessary training and maintenance in lieu of cost, जैसे कि अफगानिस्तान में which lacks a serious air force can buy such a package. India should significantly set up both its budgetary and troop contribution to UN peacekeeping also. So all these things can be done to further enhance the investments or the money. It would not only enhance India's clout, अब जो UN peacekeeping है, but this money would invariably come back to India as compensation for troops and equipment. So these efforts will add to revenue sources and improve efficiency in manufacturing, procurement and fund utilization. So it is a multi-pronged process. So that is expected to generate commensurate output to ever increasing budget allocation, right? So lastly we have GS4 question. What do you understand by public sector ethics and differentiate it with government ethics? तो जब हम पब्लिक सेक्टर एथिक्स की बात करते हैं, इट सेंटर्स अपॉन द ड्यूटीज़ ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स टुवर्ड्स पब्लिक. ये क्या है? मॉरल जस्टिफिकेशंस एंड कंसिडरेशंस मेड वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़ एंड डिसीजन मेकिंग. तो जब पब्लिक सर्वेंट्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या मॉरल जस्टिफिकेशंस या कंसिडरेशंस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं या डिसीजंस लेते हैं. दैट इज़ वॉट कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक सेक्टर एथिक्स. Ethics are an accountability standard by which the public will scrutinize the work being conducted by the members of these organizations. The question of ethics emerges in the public sector on account of its subordinate character. Government ethics क्या है? Application of the ethical rules to government. It is that part of practical jurisprudence or the philosophy of law that governs the operation of the government और उसका क्या relationship है with the people that it governs. So definitely जो government ethics है they are way broader than the public sector ethics. So क्या government ethics में क्या आता है? Issues of honesty, transparency in government dealing with such matters such as bribery, corruption, ठीक है, legislative ethics, regulatory ethics, conflict of interest, avoiding the appearance of impropriety, open government and legal ethics. So government ethics बहुत ही ज़्यादा broad चीज़ है compared to public sector ethics. So what is the difference? Again, government ethics are much broader while public sector ethics can be a branch of government ethics. ठीक है? So government decisions not only in domestic boundaries but also in international domain will come under government ethics. पर जबकि जो public sector है वो वही है कि public services तक ही सीमित है. नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर एथिक्स कैन बी मोर अबाउट हाउ द पब्लिक इज बीइंग सर्व्ड एंड अफेक्टेड, मींस फोकस इज ऑन इंडिविजुअल्स. जबकि गवर्नमेंटल एथिक्स का जो फोकस है वो ये है कि डिसीजंस कैसे सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं. अगेन उसका जो फोकस है वो ब्रॉडर है. वाइल पब्लिक सेक्टर एथिक्स ओवरलैप्स इन पार्ट विद गवर्नमेंट एथिक्स, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए सेपरेट ब्रांच इन दैट गवर्नमेंट एथिक्स इज ओनली फोकस्ड ऑन मॉरल इश्यूज रिलेटिंग टू गवर्नमेंट्स. ठीक है, जैसे वही ब्राइबरी, करप्शन. जबकि पब्लिक सेक्टर ethics also encompasses any position included in the public administration. तो broader यही है, ये थोड़ा narrow concept है और government ethics is broader concept. ठीक है, so that's all for today. Thank you so much.